हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट अस सी हाउ डू वी अप्रोच अ केस ऑफ हेमेचूरिया। अगर किसी पेशेंट को हेमेचूरिया है तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू। So we all know that hematuria is nothing but presence of blood in the urine, and it can be because of renal, extra-renal and other causes like the kidney problems like glomerulonephritis, IgA nephropathy, Alport syndrome, thin basement membrane disease, or the non-glomerular causes like it could be renal stones or pyelonephritis, renal tumor, polycystic kidney disease, trauma, sickle cell disease, renal papillary necrosis can cause hematuria. Suppose there is a tumor or a trauma to the ureters, there is a stone in the ureter, infection or ureter stricture, or there is a stone in the bladder, chronic irritation, infection, parasitic infection, or trauma to the bladder. If there is prostatic hypertrophy, or there is a trauma, or there is prostatic cancer, urethral infection, urethral trauma can all lead to hematuria. There are certain other causes also, like drugs like rifampicin. Several foods like beets can also give rise to pinkish color urine. So, how do we evaluate a case of hematuria? See, for that, we will first have to know the history of the patient. We will have to do a physical examination. Dipstick evaluation चाहिए होगा, laboratory evaluation चाहिए होगा, patient का urine microscopy करना पड़ेगा, sediment evaluation करना पड़ेगा, पेशेंट को प्रोटीन्यूरिया है देखना पड़ेगा। बहुत से अदर टेस्ट रहेंगे ऐसे हेमेचूरिया में जो हम यूज करेंगे पेशेंट के ये हेमेचूरिया को इवेलुएट करने के लिए। वो ब्लड टेस्ट हो या तो किडनी फंक्शन टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, होल एब्डोमेन या केयूबी हो, सिस्टोस्कोपी हो, IVU हो, ये ऑल दीज टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कम टू एग्जैक्ट डायग्नोसिस कि क्या हेमेचूरिया को कॉज कर रहा है एंड हम कैसे उसको मैनेज करें। जब व्हेन वी कम टू हिस्ट्री, हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमको पेशेंट से ये जानना होगा वेदर द हेमेचूरिया इज ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक। हमको दिख रहा है या तो इट इज ओनली ऑन द माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट एज हेमेचूरिया, वेदर वो इट इज इनिशियल पार्ट में आ रहा है कि लेटर स्टेज ऑफ यूरिनेशन में आ रहा है, या तो थ्रू आउट द यूरिनेशन वी कैन सी द ब्लड, or is there any associated pain, is there any clot, if at all there is clot, what are the types of clot we can see, either it is worm like, whether it is flat, or whether it is frank blood, etc. So history plays an important role in coming to or hinting at the diagnosis of few condition. For example, अगर family history of bleeding है या bleeding disorder है या bleeding tendency है, patient को abnormal coagulation tests अगर उसके results में आते हैं तो it will point towards a hemophilia or ITP, TTP, DIC, etc. So that could be the cause of hematuria. अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूरोलिथियासिस है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स है, तो वी माइट हैव टू डू सीरम 24 आवर यूरिन कैल्शियम एंड यूरिक एसिड, सो देयर माइट बी अ फैमिलियल यूरोलिथियासिस। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीनल सिस्टिक डिसीज है, सो व्हेन वी डू IVU और a renal ultrasound we might find a polycystic kidney disease or a medullary sponge kidney. अगर पेशेंट को डायबिटीज है या पेशेंट बहुत से पेन किलर्स खा रहा है, एंड इफ वी sometimes do a sickle cell screening or a IVU etc, we might get even a papillary necrosis. Glomerular causes which cause hematuria may it be IgA nephropathy or focal segmental glomerulosclerosis, post-infectious glomerulonephritis etc. Suppose if there is family history of hematuria and familial nephritis है, पेशेंट को डेफनेस है, तो दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स द अल्पोर्ट सिंड्रोम। अगर पेशेंट को रैशेस है, आर्थराइटिस है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेवल्स ज्यादा है, उसका ANA लेवल बढ़ गया है, दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स SLA। सपोज पेशेंट इज हैविंग हिमोप्टाइसिस, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, उसको अनीमिया है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स गुड पैस्चर सिंड्रोम। सपोज इफ देयर इज अ रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, उसका ASO टाइटर ज्यादा है, सोर थ्रोट हो गया है पेशेंट को, C3 लेवल ज्यादा हो गया है, इट कुड बी अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
So these are the things which will help us to evaluate a case of glomerular hematuria, क्योंकि glomerular hematuria can be because of all these conditions, and these history taking as well as these other tests like could be a complement test हो या तो blood test हो या तो ASO level हो, all these tests will help us to come to a diagnosis. So whenever there is hematuria, a proper history taking is very very important. Along with that, the other test could be complement test or the blood test or the hemograms, ASO levels, etc., will help us to come to a conclusion that could be what could be the cause of that kind of a hematuria. So if you get a patient, एक पेशेंट आ गया जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर हमको आरबीसीज दिखाई दे रहे हैं, उसका यूरिन भी ग्रॉसली वो पिंकिश या रेडिश भी नहीं है, तो हमको वी विल हैव टू रूल आउट कहीं पेशेंट मेंस्ट्रुएटिंग तो नहीं है, या तो कहीं पेशेंट ने विगरस एक्सरसाइज तो नहीं किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्सफुल पेनिट्रेशन एक्सेट्रा समटाइम देयर कैन बी hematuria, कहीं वायरल इलनेस तो नहीं है, was there any kind of a trauma or infection. Along with this, we might have to do certain other tests, as I've told you, like the blood test, or it could be the complement levels, or it could be the ANL levels, etc., which all will help us to come to a diagnosis. But to even rule out the other causes of pseudo hematuria are also important before we approach a case as purely case of hematuria. Whenever a patient comes and you do a dipstick and आपको blood positive आ गया, so the second thing would be to see it under a microscope. Now there are two scenarios. You saw it under the microscope and the patient had less than 3 isomorphic RBCs. That means the cells RBCs जो भी थे उतने distorted नहीं थे. They were not dysmorphic RBCs. They were isomorphic RBCs. ऐसे आपको less than 3 मिलते हैं तो you will have to see the symptoms. अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, there is no additional workup required, we can just ignore it like as cases of a trace, blood as trace, and we can ignore it. Suppose पेशेंट को सिम्टम्स भी है, like पेशेंट को वीकनेस है, मायालजिया है, रेडिश कलर यूरिन है और उसको मसल पेन एक्सेट्रा है, we might have to evaluate him for rhabdomyolysis etc., because patient is having blood positive and also there are less than 3 RBCs, which can happen in case of rhabdomyolysis etc. Suppose आपको डिपस्टिक में ब्लड पॉजिटिव आ गया एंड आपने माइक्रोस्कोपी के अंडर देखा एंड यू गॉट मोर देन 3 RBCs per high power field, and also we will have to see how are the RBCs. अगर वो RBCs बहुत dysmorphic है, उसका morphology altered हो गया है, पेशेंट को proteinuria है, cellular cast है, you are seeing RBC cast etc., that will more suggest you towards a glomerular etiology. So you will have to evaluate him for other serological testing, urine protein creatinine ratio, complement level etc. Sometimes the nephrologist might even order a renal biopsy. Suppose आपको डिपस्टिक सिर्फ पॉजिटिव था but there were no dysmorphic RBCs etc. So you will have to assess the risk of the patient. Patient को आपको उसका risk assess करना पड़ेगा, whether he is low risk, intermediate risk or high risk. So how will you assess the risk? Suppose if the patient is more than 40 years of age, patient को gross hematuria है क्या, प्रीवियस उसको कोई यूरोलॉजिकल डिसीज या डिसऑर्डर थे क्या, उसको इरिटेटिव वॉइडिंग सिम्टम्स है क्या, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या. सो वी विल हैव टू इवेलुएट ऑल दिस रिस्क फैक्टर एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क कैटेगरी वी ट्राई एंड फॉलो अप द पेशेंट विथ अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक सिस्टोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा within a period of 6 months or 1 year. So the finding of blood in the urine as well as the examination under the microscopy will help us to find out exactly where lies the cause, जिससे कि हम जो etiology है उसको narrow down करके वो etiology तक हम पहुंच सकते हैं. Remember, never ignore any degree of hematuria. यूरिन में अगर ब्लड निकलता है तो वो abnormal है. Any blood in the urine should not be ignored. We will have to investigate that case of hematuria. Proper history taking becomes very important, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि only just with the help of history how we can come to a differential diagnosis. So the patient's history,
the patient's physical examination, the patient's urine examination, both macroscopy as well as microscopy, along with other investigation like serology हो, blood test हो, या urine protein creatinine ratio हो, renal ultrasound हो, cystoscopy हो, all of this will help us to narrow down as to why there is hematuria for that patient, because it is very important to identify the cause and to treat it accordingly. So this is how we approach a case of hematuria along with the history and other investigations. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.